Okay, last time we had seen the transistor currents. Today we are going to see the transistor terminal voltages. So what are the various different polarities when you talk about a transistor? So the very first thing that we are going to do is a NPN bias polarities. So if I show the transistor like this, what are the various different voltages? Please see that it is, we are having this as the collector, this as the base, and this as the emitter. So we have this voltage as VCB, this voltage as VBE. Please understand these voltages properly. Look at the polarities. Okay. This VBE should be 0.7 volts if you use silicon transistor, 0.3 volts for germanium transistor. We've already seen this. Why it has to be 0.7 volts or more than that? Because we want to forward bias the base emitter junction. All right. In case of PNP device, okay, let us see what are the PNP bias polarities. Look at the way in which I am drawing the transistor. So you have this as the collector, this as the emitter, this is the base, and the voltage polarity is B. We call this as VBE itself, obviously. But the polarities now are like this. Similarly, in this case, it will be VCB. This will be more negative. Guys, are you able to see the screen properly? Yes, sir. Okay. So it should be quite easy for you to understand that this is the way in which the transistor polarities and the way in which the voltage is provided, supplied externally in this DC condition only. We are not talking about AC anymore right now. So in case of such kind of whenever we want to start, I mean we want to initialize the transistor, the bias polarities should be like this. Then only we can say that the transistor is now ready to begin its work. Okay, fine. So if this is clear to all of you, let us move on to the transistor as a two-port device. So transistor as a two-port device. Now what do you mean by two-port? Okay, any device or any circuit that you take, normally we normally establish it like this. So this is a two-port network, two-port device or network, and there is one input port and there is one output port. Okay, so I'll call this as input port and this is output port. Look at the current directions now. The current directions will be I1. So I will call this port as let us say 1 1 dash. This I'll call as 2 2 dash. So it is a two-port network.
any circuit that you take, you have this kind of representation. Okay, so if you look at the current direction, this is I1. Here we have plus minus V1, means that voltage applied at input port, that is port 1 dash, is V1, and the current that flows into the port is I1. Okay. In a similar way, we have this as I2. Now the polarities are arbitrary for the time being. This we call as V2. Please remember this properly. Look at this situation here. Common sense says that output port means the current should flow in this other direction, right? Not necessary. Even if it flows in the opposite direction, that is flows out of this port, I simply have the reversal of the reversal of the polarity. That is, I will establish it as minus I2. Are you able to understand this, guys? Hello. Yes, sir. So you should not have any confusion as far as the direction of the current is shown over here. Okay, we will assume the direction to be like this only. And if the actual direction of the current flow is out of that port, we'll simply invert that sign. Okay, so this is the representation of a two-port device, or also called as the four-terminal device. It has got four terminals, four-terminal device. But our transistor has got only three terminals. So how do I represent it? How do I represent it? You can represent it this way. So it is also going to be a two-port device. This is going to be one terminal, another terminal, and the third terminal is going to be common. The third terminal is going to be common. Okay. So again, similar way, we have this as 1 dash, 2 dash. So this is your bipolar junction transistor. So when analyzing such a circuit, one of the terminals will always be common. You can see here very clearly, this is common. So one terminal you can keep common and represent the bipolar junction transistor as a two-port device or a two-port network. Okay, so this should be fairly simple to understand. So we have 1 dash as input port, 2 dash as output port, and the standard notations for the current and the voltages we have already seen. Like V1 represents the input voltage, V2 represents the output voltage, I1 represents the input current, and I2 represents the output current. Okay. So since the transistor is a three-terminal device, and we know that we have to keep one terminal common. We have to keep one terminal common in order to represent it as a two-port device. We come out with three different configurations. Three configurations are possible. What are the three configurations? We can keep the base terminal common. So it is common base configuration. You can either keep common emitter
or emitter can be a common terminal between input and output and common collector. Have you understood this? Hello guys. सेकंड वाला क्या है? Sorry, सेकंड वन सर. देखो कॉमन सेंस यूज करो. कितने टर्मिनल है अपने डिवाइस को? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कितने टर्मिनल्स हैं? 3. व्हाट आर दे? कौन से टर्मिनल्स बोलो? बेस, एमिटर एंड कलेक्टर. Yes or no? Yes, sir. So at one given time I am keeping one terminal common. तो क्या क्या होना चाहिए? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक से ध्यान दो. सिर्फ जो भी दिख रहा है वो कॉपी मत करो ब्लाइंडली. आया समझ में? हेलो. Yes, sir. So we have 3 different configurations in which you can use this device. Let me go back to the figures so that I can explain it in a more nice way. Okay, just a moment. तो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. So this is for your NPN device and this is for your PNP device. देखो करंट क्या कैसे है? How the current is flowing? What are we looking at is a common base configuration. So we'll start with common base configuration. So why do we call it as common base configuration? Yes, answer this question. Why are we calling this as common base configuration? Guys, this is your emitter, this is your collector and this is the base. This is emitter, this is collector and this is base. Why are we calling this as common base configuration? Answer this question please. Am I audible? Guys, am I Yes, audible? sir. Yes, sir. So if I am audible, why don't you respond? Yes, sir. So why do we call this as common base configuration? सर ये समझ नहीं आया. अब वही तो पूछ रहा हूँ यार. सर अगर समझ में नहीं आया, समझ में आया. 4-10 बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं है. There is no response at all from your side. How am I supposed to understand whether you have understood or not? तो बोलो ना, नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया. I'll explain it once more. बाद में जाके क्या पॉइंट है? ये तो समझ में आया. ट्रांजिस्टर एज ए 2-port डिवाइस. समझ में आया क्या? तो इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? It means that you can. सर एक बार और समझा दीजिए. अरे यार, you can. That is what I am trying to tell you. Which part you did not understand? You tell me specifically. Which part you didn't understand? Tell me. सर ट्रांजिस्टर एज अ 2-part डिवाइसेस एक बार समझा दीजिए. 2 part नहीं है ये, 2 port है. एक इनपुट पोर्ट होता है और आउटपुट पोर्ट होता है. कौन सा भी नेटवर्क ले लो, ये कौन सा भी नेटवर्क या कौन सा भी डिवाइस ले लो, इसको 2 पोर्ट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये बात ओके? अरे हाँ या ना? यस सर. Yes, sir.
Okay, so if you can represent any two-port device, any device as a two-port network, तो ये नेटवर्क है तुम्हारा, ये बॉक्स जो है वो नेटवर्क है और उसके लिए एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है, ठीक है। Yes, sir. अभी 4 टर्मिनल डिवाइस अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये एसेंशियली इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, नो? Yes, sir. टर्मिनल से बेस, एमिटर एंड कलेक्टर. Yes, So sir. I can represent, remember this, I can represent the bipolar junction transistor in this form. If I want to do that for analysis purpose, what do I have to do? I have to make one particular port common to both input as well as output. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आ गया. तो एक टर्मिनल जो है Yes, sir. वो कॉमन होगा. तो अभी सिंस वी हैव 3 टर्मिनल्स, वी हैव 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. What are they? You can either make base common to both input and output, emitter common to both input or output, and collector common to both input or output. तो ये जो पहले दिखाई दे रहा है ये है कॉमन बेस. Why is it called as common base? I'll ask you again. Sir, इसमें क्योंकि बेस टर्मिनल जो है वो कॉमन रखा है. करेक्ट. इनपुट बोथ और इनपुट आउटपुट एज के वेल लिए. एज आउटपुट में बेस टर्मिनल ये कॉमन टर्मिनल है. ये हो गया एनपीएन का और ये हो गया पीएनपी का रिप्रेजेंटेशन. इन अ सिमिलर वे आई कैन हैव. सर बेस को ही क्यों कॉमन रखा? अरे एक पॉसिबिलिटी है ना, दूसरा भी 3 पॉसिबिलिटीज है ना. यू कैन कीप बेस कॉमन, यू कैन कीप एमिटर कॉमन और यू कैन कीप कलेक्टर कॉमन, है ना. ओके सर. तो ये पहला पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिखा रहा हूं मैं पहला पॉसिबिलिटी. ये दूसरा पॉसिबिलिटी है. कौन सा है? कॉमन एमिटर. So let us see how it looks like. Just a moment. ये आ गया तुम्हारा कॉमन एमिटर, दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? यस सर. Yes, sir. यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी? दिस इज योर बेस. Sir, This is your इसके common emitters collector sir, and this is your common emitter. emitters है sir. Yes, this is base, this is collector and this is emitter. So ये भी एक possibility है ना. You can Yes, keep sir. the base common, the emitter common to both input and the output ports. ठीक है? Yes, sir. यस सर. लास्ट पॉसिबिलिटी कौन सा है? Sir, common collector. कॉमन कलेक्टर. Okay, let me fetch the figure from Visio. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. I'll mark this again. Base, this is your emitter, this is your collector. This is your base, this is your emitter, and this is your collector. तो 3 आ गए configurations. Yes, sir. Yes, sir. So why we have difference? Why are they different? Because every time we have different terminal common to both input and output ports. Now based on these configurations, we have different characteristics of the device. अच्छा, पहली बात
we are representing this as a as a two port device, right? तो यहाँ पे इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है ना? So how many sets of curves do you expect? Just like I said that whenever we come across a new device, we will talk about the characteristic curves, that is the relationship between voltage and current. लेकिन यहाँ पे दो voltages और दो currents है. So at any given time, if I want to plot this V1 versus I1, you can do that. You call it as the input characteristics. If you plot V2 versus I2 or I2 versus V2, doesn't matter really here. You call this as the output characteristics. Okay? Is this clear to all of you? Yes, sir. So we have two sets of characteristics, input characteristics and output characteristics. Now we have to investigate these characteristics for the different configurations that we have seen. That is the common emitter, common base and the common collector. Let us start with the common base configuration. Again, now we are going to go into the details of this common base configuration. Okay, let me fetch the figures now. तो ये है तुम्हारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अभी इसमें और कुछ ऐड किया हुआ है, देखो क्या क्या ऐड किया हुआ है इसमें. एडिशनल कुछ है सर? सेल्स. अरे ये तो सप्लाई तो सर बैटरी एंड रजिस्टर ऐड किया गया है. करेक्ट. लेट मी अगेन मार्क दिस एज emitter. This will be the base, this will be the collector. This will be the emitter, this will be the base, this will be the collector. तो मुझे अगर प्लॉट करना है characteristics, तो I have to do something like this. So in this configuration, input is applied between emitter and base. So let us make a note of it. Input is applied between emitter and base. And where is the output taken from? Where is the output taken from? Sort of collector region. Yes, output is taken from collector and base. Of course, I mean it's quite logical. Base is common to both input and output, right? Yes, sir. Now let us quickly see the current relationship in this particular configuration. Now we have already seen the current components in the last lecture, right? So we had IC as what? IPC plus ICBO. Do you remember this? Yes, sir. Now practically ICBO is small, very, very small, which is the Yes, reverse saturation current, and is often neglected. So an important parameter of CB circuit, that is common base circuit,
is the current amplification factor alpha. So I'm going to introduce a new current amplification factor, which is going to be alpha. Now this alpha is defined as this IPC or IC, you can even take IC divided by IE. I hope you remember this figure here. देखो, is it visible? Guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करंट कंपोनेंट्स क्या क्या दिख रहे हैं हम लोगों को? एक एमिटर करंट दिख रहा है और एक कलेक्टर करंट दिख रहा है एक्सटर्नली. Now this collector current is mostly entirely made up of this IPC. So मैं जो बोल रहा था कि all the let us say holes in this case, if this is a PNP device, all the holes which start from here, from emitter, they land up, almost all of them land up in collector. ठीक है ना? लेकिन some holes will be lost as recombination. Okay, so not all of them will reach over here. Let us say I had given you a rough estimate, like just for example, 95% of the electrons from holes from this region cross over into this region to be available for collector current as a collector current. So that actually the ratio of output current to input current is called as the current amplification factor. Okay. Now since we are looking at DC conditions only, I'm going to simply write here as alpha DC, because I'm not going to change this with time. I'm not going to change the current with time for the time being. Later on we'll see what happens. So this is called as alpha DC, that is current amplification factor, which is defined as a ratio of collector current to emitter current. And obviously alpha DC will be always less than 1. Okay? So I can write IPC as alpha DC into IE. हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? What is the objective of doing all this? Don't lose the sight of the big picture. हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एक कॉन्फ़िगरेशन में करंट रिलेशनशिप्स क्या है? This is what we are investigating. Are you able to understand this up to this point? Yes, sir. Right. Very simple. Okay. So I have introduced this current amplification factor. Now typically this value will be somewhere between 0.95 to even 0.995. ये उसका टिपिकल रेंज होता है. ठीक है? Yes, sir. Alright. So we have IC. We already have this equation with us. IC as it is composed of IPC and ICBO. Please remember what is ICBO. ICBO is the reverse saturation current. Okay. So I can write IC as, substitute from here the value of IPC. So alpha DC into IE plus ICBO. ये मेरा करंट के लिए, कलेक्टर करंट के लिए इक्वेशन आ गया, आउटपुट करंट के लिए इक्वेशन आ गया. Alright? Okay up to this point? Yes, I have sir. just merely substituted the value of IPC. That's all. Now sometimes we neglect, so neglecting ICBO. Actually neglecting, you in engineering you'll come across a lot of times when you use this word neglecting. अरे बट किसको neglect कर सकते हो तुम वैल्यू को neglect नहीं कर रहे हो
तुम उसके इफेक्ट को निग्लेक्ट कर रहे हो. प्लीज रिमेंबर दिस. So whenever I say neglecting ICBO, I always mean to say neglecting the effect of ICBO on the complete process. Why it is negligible? Because the value of ICBO is very, very less. We have already seen that yesterday. I mean, whatever, whenever we had the last session. So neglecting the ICBO means neglecting the effect of ICBO. What do I have from this? So if I neglect this, I simply have IC is alpha DC into IE. So I have come out with an expression for output current in terms of the input current. And then your alpha DC now gets redefined simply as the ratio of collector current to emitter current. ये ध्यान में रखना है. ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Okay, let us go back over here. External to the circuit, देखो, external to the circuit यानी external to this transistor, ये ट्रांजिस्टर समझो ऐसा है और यहाँ से IE जा रहा है, IC आउटपुट में जा रहा, बाहर आ रहा है, ठीक है, और बेस करंट यहाँ पे आ रहा है. तो आई कैन कॉल दिस एज अ नोड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. तो यहाँ पे नोडल इक्वेशन यानी KCL मैंने अप्लाई किया तो क्या होगा? KCL अप्लाई किया तो क्या होगा? IE is equals to IC plus IB. IB plus IE, sorry, plus IC. ठीक है ना? Yes, sir. So we have, but IE is equal to IB plus IC. So I can now write, मेरे पास IC का वैल्यू है, तो IE as IB plus IC का वैल्यू क्या है? अल्फा DC into IE plus ICBO. अभी मैं ICBO का इफेक्ट निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं. So I can write IB as simple manipulation IE into, sorry, IE minus, बोलो, Sir, alpha DC IE plus ICBO. Yes, sir. Okay. Means that IB is equal to, if I simplify this further, 1 minus alpha DC into IE plus ICBO. सिर्फ ये, sorry, should be minus, no? So minus ICBO. Minus. So आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है. अब is it okay? No, No, sir. No? No, sir. No, sir. कहाँ पे फ्रीज हो गई भाई? IB is The equals last to line IE IB equals minus to IE alpha. minus alpha DC Okay, IE plus IE. I'll share it once again. Okay, is it okay now? No, sir. Your screen is not visible. Only your profile picture is visible. नहीं दिख रहा है? No, sir. No, sir. OneNote पेज नहीं दिख रहा है? No, sir. No, sir. Just a moment. Now? No, sir. No, sir.
now नो सर, अरे नो सर, क्या हो रहा है? सर नहीं विजिबल हो रही है स्क्रीन। एक काम करते हैं, आई विल लीव द visible now. Yes, sir. यस सर। I had to go out for the meeting and then join back. Anyways, so all right. So we have this equation now as IB equal to 1 minus alpha DC into IE minus ICBO. Now again, sometimes we can neglect this to get IB as 1 minus alpha DC into IE. ये क्या, what does it mean? What do you understand from this? ये क्या किया हम लोगों ने? So current relationship निकाली है। Yes, we were interested in finding out the current relationship between the emitter current, base current, emitter current, collector current, and so on and so forth. ठीक है ना? So what we Yes. have established here is the current relationship. Let us have a look at the characteristics of common base. ठीक है? सर दो डाउट है। हाँ? सर फर्स्ट डाउट ये कि ICBO को कब निग्लेक्ट करना है और कब कंसिडर करना है, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो बेसिकली ICBO क्या होता है? It's a reverse saturation current, right? Yes, sir. Which is very very small, to the tune of picoamperes, microamperes, and so on and so forth. So when we are talking about the temperature variations, please remember that we've already said that the reverse saturation current is sensitive to temperature, right? It Yes, doubles sir. for every 10 degrees Celsius rise in temperature. We have seen that while we studied the reverse characteristics, reverse bias characteristics of a PN junction diode, right? So अगर मेरा temperature constant है, टेम्परेचर चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो मैं सेफली ICBO को निग्लेक्ट कर सकता हूं। Yes, sir. ठीक है? And many times, just for simplification, since it is a very small value, मिली एम्पियर में करंट होता है कलेक्टर करंट या एमिटर करंट, और ये माइक्रो एम्पियर भी नहीं पिको एम्पियर में होता है, तो उसका इफेक्ट वैसे एनालिसिस के टाइम, सिंप्लीफिकेशन के टाइम उसका इफेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now we'll start with the common base. So one more doubt. बोलो। So what is the basic difference between IPC and IC? ये हमने देखा है ना, देखो तो वो जब वो BJT के इंटरनल आईसी जब आता है सर्किट में, आईसी आता है तो ये आईपीसी और आईसीबीओ का एडिशन होता है। कलेक्टर करंट इज कंट्रीब्यूटेड टू बाय दिस पोल करंट एज वेल एज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। यस सर। तो ये रिलेशनशिप है। यस समझे? यस सर। आई होप योर डाउट इज क्लियर। यस सर। Let us have a look at the common base configuration, or common base characteristics. So I think आपकी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है। फ्रीज हो गए वापस? यस सर। यस सर। फ्रीज हो गया? Why this is happening? Yes, sir. So you are not able to see whatever I have written? सर OneNote का एक पेज है, Sir, वही freeze हो screen is गया है। visible but screen is freeze. Screen is frozen.
let me just get out of the meeting and come back. Hello, is it okay now? Yes, sir. So we're talking about the common base characteristics. Now to understand the complete electrical behavior of this device, that is the transistor, it is important for us to study the characteristics. What do you mean by characteristics? It is the interrelation of the various currents and voltages. Now these relationships can be plotted graphically. We can visualize them graphically, and they are known as the characteristics of the transistor. Most important characteristic of transistor to any configuration are the input and the output characteristics, which I have already touched upon just a few minutes back. So the very first thing that we're going to see is the input characteristics. Okay, let us see how the input characteristics look like. Let me fetch the So is this characteristic visible to all of you? Yes, sir. First Yes, of all, sir. let us understand what is this about. Okay. So input characteristics for common base. So common base में what is the input current and what is the input voltage? Common base में what is the input current and what is the input voltage? Going back to these figures So here. I1 and V1. अरे I1 and V1 अभी रिप्लेस हो गया ना करंट emitter current, collector current, emitter base voltage. These are the inputs and the outputs, no? Yes, sir. कॉमन बेस में इनपुट क्या है? इनपुट करंट क्या है? So IE. IE है, correct? And what Yes, is the sir. input voltage? So VEB. Very good. So we are going to plot this versus this. सर इसका Emitter बाहर current. के साइड एरो है तो ये आउटपुट होगा ना? अरे भाई मैंने क्या बोला है कि ये जो है ये अगर रियलिटी में इसका डायरेक्शन ऐसा भी होता है तो वह विल सिंपली कंसीडर इट टू बी नेगेटिव. तो डायरेक्शन के हिसाब से मत जाओ अभी. ओके सर. ठीक है ना? ये हो गया इनपुट करंट. और तो सर ये करंट इनपुट करंट इसलिए हुआ क्योंकि इसका नेगेटिव है. एग्जैक्ट वो भी है. और दूसरी बात जो है कि दिस इज द इनपुट पोर्ट. ये इनपुट पोर्ट है. इनपुट कैसे? पोर्ट में इनपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट होने वाला है. हाँ ठीक है, सर इसका इनपुट डायरेक्शन अलग है लेकिन फिर सर भी इनपुट पोर्ट कैसे है? अरे मैंने यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ से आउटपुट निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? इनपुट पोर्ट हो गया या आउटपुट पोर्ट हो गया? यस सर इनपुट हुआ. अरे यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ, तो ये इनपुट पोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर. why are you getting confused? यहाँ सर पे एक्चुअली आई थिंक आपका स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गया और आपने कहाँ मेंशन कर रखा है वो सर फिर से शायद से समझ नहीं आ रहा. स्क्रीन ऐसे कैसे फ्रीज हो रहा है? ऐसे तो नहीं So होता. वो IE और VEB एनसर्कल हुआ है उसके बाद पूरा फ्रीज है. उसके बाद पूरा फ्रीज हो गया है सर.
अच्छा मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा है क्या? नो सर। नो सर, No, sir. इसीलिए सर कंफ्यूजन हो रहा है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस? अंकित बहुत अच्छे। थैंक्स ब्रो। बहुत सही। मैं नहीं समझ में आएगा तो पूछना ही है ना। सही बात है। अरे पूछो भाई, इसीलिए तो मैं आगे यहाँ पे चल। बैठा हूँ, पूछना ही है। यस सर। डोंट बी शाय, पूछो, 100 बार पूछो, आई विल यस सर। एक्सप्लेन इट। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग? ये बंदा पूछ रहा था, सर ये वाला दोबारा से सर, इट ये इज आपने जो इनपुट बताया पोर्ट ना? इनपुट वाला सर, ये इनपुट मैं वाला। यहाँ यस पे सर। यहाँ पे जो मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो ये बन गया मेरा इनपुट पोर्ट। यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हो गया आउटपुट पोर्ट। सिंपल इज दैट, नो? यस सर। If you go back to this, you'll see that I can see कौन से भी नेटवर्क में you have two ports। यहाँ पे एक मैं इनपुट देता हूँ, यहाँ से इनपुट लेता हूँ। इनपुट देना है और इनपुट लेना, इसका मतलब क्या होता है ये पहले सोचो। Where I am applying some voltage, correct? For example, I am applying this यस V1. सर। Because of this V1, I1 will flow. समझ यस में आ रहा सर है? एंड यस सर एंड देन दैट्स व्हाई इट इज इनपुट। करेक्ट। और इसका जो इफेक्ट है, ये जो काम कर रहा है, ये अपना 2 पोर्ट डिवाइस काम कर रहा है, वो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। यह साला इसका आउटपुट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे उसका करंट कितना आ रहा है। ठीक है ना? यस सर। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई मीन, इज दैट कंफ्यूजन क्लियर? यस सर। ओके, यस नाउ सर। इफ यू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स, what are the characteristics, what versus what? So V versus I. Yes, सर so वी we have, वर्सेस आई। yes, VEB, or the other way around, IE versus VE. अभी मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं ना, कि इफ आई कीप दिस टू, इफ आई चेंज दिस टू वैल्यूज, यानी मैं अगर ये बोल रहा हूं, इफ आई चेंज V1, आई मीन इफ आई वांट टू प्लॉट V1 वर्सेस I1 या I1 वर्सेस V1, डजंट रियली मैटर, बट इन दैट केस there should be some constant value for V2. I should keep that output constant. Okay? So And V1 similarly, I1 चेंज करेंगे तो V2 भी तो चेंज होगा ना? नहीं ना, for a particular value of V2, for a particular value of V2, V1 और I1 के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ये मैं देख रहा हूँ। यस सर। For a particular लेकिन value, सर इसमें तो ये V1 I1 जो है वो इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक है और V2 I2 आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक exactly है। the तो reason why जैसा we have, इनपुट the reason why we जैसा have to do इनपुट it, देंगे वैसा ही आउटपुट होगा ना। अरे बाबा, the reason for this is basically that ट्रांजिस्टर में कैसे होता है कि this output voltage also affects the input। ये आपको SDC 1 में पता चल जाएगा कि ऐसे क्यों होता है। V2 also affects these parameters। ये सिर्फ ऐसे ब्लैक यस बॉक्स है। सर दैट्स आल्सो माय पॉइंट सर, दैट्स आल्सो माय पॉइंट कि सर जैसे V1 I1 को V2 अफेक्ट करेगा, V1 I1 जो है उसको V2 अफेक्ट करेगा, तो देन इनके भी ग्राफ में चेंज आएगा ना।
तो इसीलिए हम लोग V2 को कांस्टेंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर प्लॉट कर रहा हूँ एट ए कांस्टेंट, आउटपुट क्या है इसका, V2 क्या है ये कॉन्फ़िगरेशन में देखो। सर 0.7। अरे आउटपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, सो इसका VC आउटपुट वोल्टेज क्या है, सर तो पीसी। ये देखो यहाँ पे क्या है, सर VCB। VCB है ना, तो Yes, मुझे sir. ये VCB कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट VCB, and because of that for different values of VCB I get different curves। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे VCB 0 है तो ये ऑलमोस्ट लाइक अ डायोड दिखता है, ऑब्वियसली ये जंक्शन डायोड ही है वो। लेकिन मैं अगर VCB का वैल्यू चेंज करता हूं तो ये कर्व्स थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं। If I increase VCB, these curves are going to shift in this direction। ये देख लो पहले, ये phenomenon देख लो। So how do I plot the input characteristics for common base configuration? बोलो, how do I plot? सर VCB को चेंज करने से कर्व शिफ्ट होता है। VCB अगर मैंने कांस्टेंट रखा एक वैल्यू, समझो VCB मैंने 0 रखा, एंड नाउ इफ आई प्लॉट करना यानी क्या करना है, मैं VEB स्लोली बढ़ाऊंगा और मैं देखूंगा उसका रिकॉर्ड करूंगा IE पे क्या इफेक्ट होता है ना। Yes, I will make VEB, I will change VEB, increase from 0 to some value, and I will note down the value of IE and I will plot it। This exercise I will do for VCB equal to 0। वापिस मैं क्या करूंगा, VCB का वैल्यू करूंगा 1 वोल्ट और I will repeat the procedure, so I will get another curve, ये orange curve। Again what I will do, I will change the value of VCB to 6 volts and I will again repeat the procedure to get this pink curve over here। समझ में आया? yes sir। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देख लो, ये ऑब्जर्वेशंस है। So what we will observe, I mean we will write down the observations one by one and then see. But have you understood this? Why this kinds of set of curves do we get? yes sir। These set of curves are Sir, you are not audible। So we voice observe। disconnect। क्या हो गया? हाँ सर, बीच में आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अभी आ रही है ना? yes sir। So we have Yes, sir. some observations। Observation number 1, after this cut-in voltage, यानी क्या कट-इन वोल्टेज, यानी क्या, ये हो गया आपका कट-इन वोल्टेज। लेट मी जस्ट remove this। आफ्टर दिस कट-इन वोल्टेज यानी ये वोल्टेज, आफ्टर दिस कट-इन वोल्टेज IE increases rapidly। देख रहे हो ना, IE increases rapidly। yes sir। That is the first observation, with small increase in VEB। So IE, so after cut-in voltage, IE increases rapidly for small increase in VEB।
So it means that, okay, can I find out the input resistance? Is it possible for me to find the input resistance in this part of the curve? Guys, input resistance का मतलब क्या हो गया? Ri input resistance will be equal to क्या versus क्या? Vi और V1 divided by I1. ये हो गया उसका इनपुट रेजिस्टेंस. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बट अंडर अ कांस्टेंट V2 बिकॉज ये चेंज हो रहा है ना कर्व्स. ये कर्व्स क्यों चेंज हो रहा है ये बाद में बोलता हूँ. बस अंडरस्टैंड दिस. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द इनपुट रेजिस्टेंस Ri, हाउ विल यू फाइंड आउट फ्रॉम दिस कर्व? ऑलरेडी मार्क किया है मैंने. कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे? स्लोप. ये देखो, डेल्टा VEB, चेंज इन VEB एंड चेंज इन IE. So it will be delta VEB divided by delta IE. ये हो गया तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस बट अंडर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ VCB. अभी यहां कर्व से ही देख सकते हो, यू कैन एस्टिमेट व्हाट इज द न्यूमरेटर. डेल्टा VEB, हाँ है कि नहीं है? यस सर. यस सर. और डेल्टा IE देखो, तो वैल्यू क्या होगा Ri का? ज्यादा हो या कम होगा? सर बहुत ज्यादा छोटा. सर छोटा ज्यादा होगा होगा ना. ये कम होगा. न्यूमरेटर इज लेस, यस सर. यस सर. डिनोमिनेटर इज मोर. तो Ri is very small. So we come to a very important observation that the input resistance of common base configuration is very small. ये ध्यान में रखो. ठीक है ना? All right? यस सर. Yes, sir. Okay. यस सर. So make an observation that input resistance, also later on we are going to call it as input impedance of the common base configuration, is very small. Second observation, what we see here is that there is a slight increase in IE with increase in VCB. Now if you look at this curve, this is another way of saying that we get a separate set of curves when I change the value of VCB. Or if I put it over here in this context itself, मैं क्या करता हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू रखता हूं VEB के लिए, ग्रीन लाइन. तो क्या किया मैंने? I kept VEB constant looking at this curve itself, right? हाँ या ना? Yes Yes, sir. sir. Yes sir. Green line indicates that VEB is constant. Now what are the different values of IE for different values of VCB? ये देखते हैं. तो ये इंटरसेक्शन देखो, ये यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है और ये समझो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है. We are looking at the intersection of that line, green line, with pink lines and red line, red curve. So what do you say? What can you understand from this? If I keep VEB constant and if I change the value of VCB, what will happen to IE? But it will increase.
Increase. Sir, IE increases. IE will increase. So we can make note and observation that there is a slight increase in IE with increase in VCB. If you keep VEB constant. अब ये क्यों हो रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है एक मिनट. Okay. So if I look at the base and the base emitter collector junctions, okay, I'll just use a free hand now. Oh. ये हो गया तुम्हारा एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर. सो VCB कहां पर है ये देख लेते पहले. What is VCB? You are applying सर voltage. एक्चुअली हमारे नेक्स्ट क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है. अरे भाई नेक्स्ट क्लास भी मैं ही ले रहा हूं. यस सर. तो ये कलेक्टर एंड बेस, यहां पे आप लोग क्या करोगे? VCB अप्लाई करोगे. और VCB क्या होगा? VCB is going to reverse bias. We have already seen this. Reverse bias the base collector or collector base junction. All right. हाँ या ना? तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन जनरेट होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Around this you will have depletion region like this. Remember the depletion region extends more into the lightly doped region. ये depletion region हो गया. ठीक है. तो effectively the base का जो width है, electrical width, वो कहां से कहां तक है? ये यहां से सिर्फ यहां तक होता है. That is the effective base width of the effective electrical base width. So this we call it as a effective electrical, physical नहीं, base width. इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा बेस रीजन और नैरो हो गया. बेस रीजन तो नैरो हो गया. ठीक है. अभी अगर बेस रीजन नैरो हो गया, समझो ये दिस इज अ NPN डिवाइस. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पे जा रहे हैं. दे आर गोइंग हियर लाइक दिस. और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं पोल्स के साथ. As we said that almost 95% of the electrons starting from N type land up in, so ये आपका emitter current है. समझो डायरेक्शन उल्टा होगा इसका. कन्वेंशनल करंट फ्लो के हिसाब से. और ये आपका कलेक्टर करंट है. ठीक है. ओके अप टू दिस पॉइंट.
guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अगर इसको what we have here is the base width. Now where will be the recombinations and how many electrons will really be lost in the base? That depends on how wide the base is. If the base is more wide, it may have more number of holes. So more number of electrons will combine with these holes and they will be lost. तो अगर यहाँ पे समझो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो यहाँ से यहाँ पे 95 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। लेकिन अगर बेस उसका कम है, बेस विड्थ अगर कम हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच नंबर ऑफ होल्स विच आर अवेलेबल फॉर रिकॉम्बिनेशन आर ओनली 3। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे अभी अगर मैंने बेस विड्थ कम कर दिया तो? How many electrons will reach here? 97. 97. तो कलेक्टर करंट यानी एमिटर करंट बेसिकली वो बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया. That is what we are looking at here. Emitter current increases. We already know the equation. IE is IB plus IC. Obviously IC बढ़ रहा है तो IE भी बढ़ने वाला है. क्यों बढ़ेगा? If I reduce the base width. समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन यानी चेंज. तो बेस विड्थ चेंज हो गई तो ये होने वाला है. बेस विड्थ अगर कम हो गई तो तुम्हारा एमिटर करंट बढ़ने वाला है. अभी बेस विड्थ कैसे बढ़ेगा या सॉरी बेस विड्थ कैसे कम होगा? इफ आई मेक दिस मोर एंड मोर रिवर्स बायस, if I make the emitter base junction more and more if I make collector base junction more and more reverse bias, what will happen to the base width, electrical base width? It will reduce. Yes, it will reduce. तो मैंने अभी ये बढ़ा दिया है, रिवर्स बायस और बढ़ा दिया है, यानी VCB बढ़ा दिया है मैंने. VCB I have increased. तो इसका डिप्लीशन रीजन बढ़ गया तो ये बेस विड्थ जो है इफेक्टिव ये कम हो गया. तो बेस विड्थ has reduced and we have seen that if base width reduces, what will happen to the emitter current? Emitter current will increase. This is the effect that we are looking at here. जैसे भी मैं for a constant value of VEB, if I change VCB from 0, that is this point over here, if I change it to VCB, I land up here and I land up in increase in the emitter current. समझ में आया? This phenomenon is called as base width modulation. ठीक है? Yes, sir. All right. तो अभी ये दो ऑब्जर्वेशंस हमने कर लिए फॉर इनपुट characteristics of common base configuration. Let us have a look at the output characteristics. Do you want a break of 2 minutes or 3 minutes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it's exactly 11:09. We'll meet at 11:15. ठीक है? I just keep the Yes, sir. channel open. Thank you, sir.
All right, we resume now. Guys, are you there? Yes, sir. Now let us have a look at the output characteristics. Okay. So basically, what is it that we want to plot? What versus what? V2 versus I2. What is V2? We go back here. What is V2? Yes. What is V2 and what is I2? So V2 VEB and I2 IE. VCB. V2 is No, sorry, VCB. sir. VCB and IC. Yes, VCB and IC. So this is what we are going to plot. So this is going to be VCB versus IC. Of course, now what we have to do is we have to keep I1 constant, that is IE constant. Let us have a look at how this looks like. Is it visible now? Yes, sir. So what is it that you see is a plot of VCB and IC at constant values of IE. You see a very interesting thing. Let us start by keeping, let us say IE as 0. If IE is 0, obviously IC is going to be very, very small, in fact negligible. If you look at this equation back, if I go, if you look at this equation, if IE is 0, what is going to be the value of IC? So ICBO. Correct. ICBO is a very small value. So very small current you can see over here. I'll just repeat that. Let us start from here, not from the other side, because this needs an explanation. Very important. So if I start from here 0, that is VCB is 0 and IE and IE equal to 0, what I get is a very small value here, which is equal to your reverse saturation current. But if I increase IE to 1 milliampere, you'll see that for the similar values I get this curve. Okay, and numerically you'll see that it is equal to IE, and nothing great here, because neglecting ICBO, what we have said is that IC is alpha DC into IE, and alpha DC we said it is about 0.95, no? Yes, So sir. in this case IC will be nearly equal to IE, and that is evident from here. So if I keep IE as 1 milliampere and if I change the value of VCB, that is the output voltage, in that case the collector current that I'm going to get is going to be exactly similar or equal, nearly equal to IE. If I increase IE, IC will also increase. If I increase IE to 3 milliamperes,
IC will also increase to 3 milliamperes. So more or less this is a flat curve. Okay. Yes, sir. Of course, it's not entirely flat. We'll see that in the next, discussion. From this, we observe a couple of things. First of all, okay, this IE does not reduce to zero. IC does not reduce to zero even if your VCB is zero. This is one observation. See, it is non-zero here, non-zero here, non-zero here. So even if VCB is zero, IC is not zero. To make IC zero, I have to slightly go into this direction and slightly forward bias the collector base junction. This is one very important observation that you see. Yes, sir. I have to slightly forward bias, very small forward bias देना पड़ेगा to make this IC zero. ठीक है? तो एक ये पूरे ग्राफ में we see three distinct regions. I hope the colors are visible to you. ये रीजन में ये एक रीजन है, ये हरा वाला एक रीजन है, ये एक रीजन है और ये ब्लू वाला एक रीजन है. तीन रीजन दिख रहे हैं. गाइस सर एक तो ये जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड एक रेड है, देखो ये एक रेडिश है ना, ये वाला. यस सर. ये एक रीजन है, ये ग्रीन वाला एक रीजन है, दिख रहा है. यस सर. और ये ब्लू वाला एक रीजन है. यस सर. हाँ, तो ये तीन रीजन्स का देयर इज अ स्पेशलिटी ऑफ दीज रीजन्स. This red region is called as saturation region. That is when the transistor is in saturation. We'll see what it means. This region is the active region. This green region is called as the active region. And this blue region is called as the cutoff region. Blue region is called as the cutoff region. So what we have is that there are three states, let us say, or three regions. One active region, and when is that active region there? Base junction and collector base junction. When emitter base we get the active region. कट ऑफ कहां पे मिलता है, कब मिलता है कट ऑफ? When emitter base junction is reverse biased and collector base junction is also reverse biased. और saturation region कब मिलता है? सर कट ऑफ रीजन को रिवर्स बायस क्यों करेंगे एमीटर बेस जंक्शन को? एक मिनट, तो जीरो पे ही आ जाएगा ना. ओके, गुड क्वेश्चन. लेट मी आंसर दिस. ये रीजन में क्या है? व्हाट इज VEB? व्हाट इज VCB? Rather, what is IE? I is equal to 0. 0 है. IE का मतलब IE 0 इसका मतलब क्या है? Sir, IC is also near equal to 0. IE 0 है ना? Yes sir. अभी देखो जहाँ यहाँ पे जाएंगे I इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है? I इक्वल टू 0 का मतलब ये I इक्वल टू 0 कब होता है? When will I will equal to 0? When your VEB is below this. Yes sir. VEB 0 है, यानी VEB स्मॉल है या फिर लेस देन 0.7 है, इसका मतलब वो
एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस्ड है? Anything less than 0.7 volt we'll call it as a reverse bias. Yes, sir. तो एमिटर बेस जंक्शन क्या हो गया? हाँ सर, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ रीजन कब होगा? जब एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस है। Yes, ठीक है, समझ में आया अभी? yes, sir. अभी सैचुरेशन रीजन कब होगा? When emitter base junction is forward biased and collector base junction is also forward biased. Yes, sir. इसको फॉरवर्ड बायस कैसे क्यों बोलेंगे? ये तो नेगेटिव में जा रहा है भाई, तो फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ? फिर वो ICBO फ्लो करता रहेगा ना रिवर्स बायस। नहीं 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 नहीं, इसको रिवर्स बायस कैसे बोलेंगे? VCB, देखो VCB, पहले ये पिक्चर ध्यान में रखो। ये तुम्हारा बेस है और ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को मैंने ये समझो NPN, कलेक्टर बेस जंक्शन को मैंने रिवर्स बायस करना है, तो मैं क्या करूंगा? बेस को नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल, हाँ और ये ऐसे होगा, करेक्ट? इसको ये हो गया रिवर्स बायस। अभी इसको फॉरवर्ड बायस करना पड़े तो क्या होगा? ठीक है, ये इसका मतलब है ये हो गया VB और VCB, VCB, ठीक है ना? अभी इसको मैंने रिवर्स बायस करना है तो क्या होगा? कैसे होगा सर? रिवर्स बायस करना है तो सर इसका नेगेटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को अपोजिट कर देंगे। इसको? अभी ये तो रिवर्स बायस करना है मुझे अभी ना, तो Yes, इसको sir. क्या करना है? P ये निगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। अभी Yes, इसको sir. मैंने फॉरवर्ड बायस करना है तो क्या करेंगे? बैटरी को अरे चुप रहो ना दे। हेलो, क्या करेंगे? ये उल्टा करेंगे, यानी ये VCB क्या हो गया? मैंने निगेटिव कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। ये जो पार्ट है वो दिखाता है कि मैं इसको स्लाइटली फॉरवर्ड बायस कर रहा हूं। In that case, in that situation, what I get is this set of curves. This set of curves. Abhi, let us have a look at the peculiarity of these curves. In active region, so for operation in active region, collector base, emitter base junction is forward biased, while collector base junction is reverse biased. We have already seen that. In this region, IC is approximately equal to IE. Let us write down these observations, very important observations. So in saturation region, in active region, IC is nearly equal to IE. And actually, the transistor works as amplifier in this region. अभी बोलेंगे कैसे? So there is a linear relationship between the input current and the output current. ये output current है और ये input current है. So there is a linear relationship, no? If you plot, just for fun, if you plot IC versus IE, तो ये linear ही होगा, straight line होगा. So this is where it works as amplifier. ठीक है? Second observation, if the emitter current is 0 and collector current is simply your ICBO, this region we are going to calling it as cutoff, and so the device is switched off, as if
because your collector current is very small, nearly equal to 0. So in cutoff region, IC will be nearly equal to 0. Third observation, in saturation, अभी saturation में देखो क्या हो रहा है. Saturation में क्या हो रहा है? तो बोल सकता है कि ये ऐसा रिलेशनशिप होगा. रिलेशनशिप बिटवीन एमिटर करंट एंड कलेक्टर करंट का रिलेशन कैसे होगा? यहाँ पे तो 1 to 1 हो गया ना, लीनियर हो गया ना. ये एक्टिव रीजन में लीनियर है, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया. लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात अलग है. यहाँ पे कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पे यू विल सी दैट द कलेक्टर करंट increases exponentially. This is important. As you increase VCB from -1 volt to 0 volts. सर ये सैचुरेशन रीजन का थर्ड पॉइंट. ये सैचुरेशन रीजन में क्या है, रिलेशनशिप कैसा है देखो. VCB और कलेक्टर करंट का सैचुरेशन कैसा है देखो. कलेक्टर करंट का रिलेशनशिप कैसा है देखो. ये देखो, ये एक्चुअली एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है. ये फॉर अ स्मॉल चेंज, इफ आई start from here, it is 0. But if I go on increasing in this direction, what VCB, if I go on increasing in this direction, you see that there is an exponential growth increase. There is an exponential increase in the collector current for a constant value of IE. तो ये बन गया saturation region. Please understand these three regions very clearly. So ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन से रीजन होते हैं? सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन. ऑफ रीजन. उसमें करंट रिलेशनशिप कैसे होता है? सो एक्टिव रीजन में IC is Active region में approximately equal to IE. Yes. In saturation, collector current increases exponentially with VCB. और कट ऑफ में कलेक्टर करंट पूरा का पूरा बंद हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है ना? Yes sir. Okay. Next observation. In active region, you'll see that actually speaking, these are sort of, they are not exactly, as you go on increasing VCB, this is not exactly horizontal. थोड़ा सा एक यहाँ पे एक स्लाइट आपको स्लोप दिखाई देगा. These lines are going upwards, slightly upwards. देख रहा है इधर? Yes sir. Not exactly parallel to the x-axis. थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइट इंक्रीज दिख रहा है. अच्छा, अगर वो स्लाइट इंक्रीज नहीं होता, देख लो, स्लाइट इंक्रीज अगर नहीं होता, एंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द आउटपुट रेजिस्टेंस, if I want to find out the output resistance, how do you define output resistance here? Output voltage divided by, or change in output voltage divided by change in output current. यानी क्या? ये देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने, डेल्टा VCB डिवाइडेड बाय डेल्टा IC, है ना? Yes sir. So defined as delta VCB divided by delta IC. But for a particular value of IE, एक कर ले लिया ना हमने. Yes sir. अभी ये आइडियलाइज किया समझो, और ये पैरेलल है समझो. ये इवन इफ आई इंक्रीज
even if I increase the collector base voltage, the collector current will stay constant at 5 milliamperes, 4 milliamperes, depending on the value of emitter current. ठीक है, तो इसका मतलब है डेल्टा आईसी क्या हुआ? डेल्टा आईसी क्या हुआ? डेल्टा आईसी विल बी, देयर इज नो चेंज इन कलेक्टर करंट, सो डेल्टा आईसी क्या है? डेल्टा आईसी क्या है? जीरो है ना? हाँ सर। डेल्टा आईसी जीरो है तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, infinite. But this is an ideal situation, and we know that from looking at the curves, we know that the curves are not exactly parallel to the x-axis. There is a slight elevation slope to that, and still then if you see that VCB अगर ज़्यादा है, if I increase VCB from this point to this point, डेल्टा आईसी में थोड़ा सा चेंज है, so delta IC is very very small. So what can you say about resistance, output resistance? Practically, output resistance is very large, is very high. ये एक important observation है, ठीक है? yes sir. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे दिख रही है हमको कि इवन इफ आई इंक्रीज VCB, मेरा कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. माय कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं चेंज भी करता हूं तो आउटपुट करंट कांस्टेंट रहता है. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. सो IC almost is, let us say, is almost independent of VCB. This is very surprising and interesting result. It is only dictated by what? IE. जितना emitter current है उतना ही collector current flow होगा, no matter how much you increase the value of VCB. ये बहुत important observation. At this point, I want to tell you one thing. If you remember the current sources, हमने current sources किया है ना? Yes sir. तो current source का I represent it like this, no? तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस जो है करंट सोर्स का, वो आइडियली कितना होता है? आइडियली कितना होता है? So infinite. Infinite. Or practically, okay, let us say RO is very high. Do you see a similarity here? Do you see a similarity? Similarity है कि नहीं है? Yes sir. So what I can conclude is that So ये common base configuration can be set up as current source. constant voltage source. I can use common base configuration as constant voltage source. बहुत important है. If you want to make a constant voltage source, you can make use of the common base configuration. ठीक है? Yes sir. Another interesting thing happens. ये dotted lines जो है ना, और एक region है, इसको बोलते हैं breakdown region. So after a certain value of VCB, suddenly current will start flowing in large way.
Okay, so this is one more observation. So if collector base junction is sufficiently reverse bias, if you increase this beyond the safe limits, beyond whatever the manufacturer says for that transistor, we enter what is called as a breakdown region. जैसे डायोड का ब्रेकडाउन रीजन होता है ना रिवर्स बायस में, Yes, sir. वैसे ही इसका ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज शोन बाय दीज डॉटेड लाइंस. ये ब्रेकडाउन हो जाएगा. इसको बोलते हैं पंच थ्रू इफेक्ट. Why does this happen? Because it will happen because if I increase the reverse bias, देखो हम collector base junction को reverse bias ही कर रहे हैं, और if I increase the value to a larger extent, going back here, तो मैं क्या कर रहा हूं इधर? If I go on increasing the reverse bias, depletion region क्या होगा? Sir, it will decrease. और बढ़ जाएगा ना? हाँ सर. और बढ़ जाएगा. रिवर्स बायस कर रहा हूं तो डिप्लीशन रीजन और बढ़ जाएगा. और ऐसी एक ऐसी स्टेज आएगी where this depletion region will actually touch this base emitter junction. Yes, sir. तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना. Yes, sir. And so very large current will start flowing into the transistor. This effect we are going to call it as the punch through effect. So what is that punch through effect? Because of large reverse bias, the depletion region will extend to such a way, to such an extent, that it will simply touch the base emitter junction. ठीक है? Yes, sir. तो ये अवॉइड करना है पंच थ्रू इफेक्ट. ये जो है ब्रेकडाउन, at any cost you should never let this breakdown condition be reached, otherwise it may permanently destroy the device. ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. There is something called as transfer characteristics. अब ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट. ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन वन इनपुट क्वांटिटी एंड द अदर आउटपुट क्वांटिटी. ठीक है. सो इनपुट क्वांटिटी मेरा है इधर एमिटर करंट, आउटपुट क्वांटिटी है कलेक्टर करंट. सो इसके बिटवीन जो रिलेशनशिप है इसको बोलेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड एज आई ऑलरेडी सेड some time back, ये linear होगा. yes, it's going to be a straight line like this. So if I plot, this will be IC, this will be IE. So you will have simply a straight line like this. Again, I can plot this for different values of VCB. ये थोड़ा ऐसे लाइन ये सिर्फ ऐसे आएगा, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. So this is VCB equal to 2 volts. So this is for VCB 6, this is for VCB. And you know why this is happening? Because IC is equal to alpha DC into IE. This is the reason. So how can I find out? Okay, how can I find out alpha DC from this curve? How can I find out alpha DC from this curve? So slope ले लेंगे. Yes, exactly. So I can simply say alpha DC is equal to delta IC by delta I.
So from this curve, we'll be able to get alpha DC. ठीक है? Yes, sir. Still, there are we have 15 minutes with us. Shall we continue or we'll stop here? I give the option to you because putting everything so many different applications at the same time will confuse you. So shall we stop? तो कंटिन्यू करते हैं. Continue करेंगे? Yes, sir. Excellent, excellent, excellent. Okay, so now we have finished with the common base configuration. We'll start with common emitter configuration. So let me fetch the figure again. So here we have the common emitter. अभी देखो इसका इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है. So what is the input voltage? V1. It is VBE. What is I1? It is, yes, देखो तो वो VBB है ना. हाँ ठीक है ना उसको. See, I can write here why this is called VCC and why this is called VBB. We are interested in voltage across this. ये तो external supply है. ये हो गया VBE. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Similarly, इसके across जो है ना, ये हो गया VCE. Yes, sir. तो इसका what is the input current? So IB. IB. What is the output voltage? So VCE. मैंने मार्क किया है यहाँ पे. Yes, VCE. What is the output current? So IC. Very good. So we have two different sets of characteristics now again, just like what we did for common base, input characteristics and the output characteristics. So अभी इसको out. If I want to find out, if I want to see what exactly is happening, I'll use this circuit for NPN device. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So I am applying VBE as the input. Current will be set up as base current IB, and correspondingly VCE is my output and the collector current is the output current. Okay, let us quickly see the current relationships now, just like what we have done for common base. The current relations. Now we know that for CB configuration, that is common base, we have IE equal to IC plus IB. We have seen this, and so IC is alpha DC into IE plus IB.
CBO. This is for IC. Okay. In common emitter configuration, IB becomes the input current and IC is the output current. So we have to find out relationship between IB and IC. Now since IC is equal to alpha DC into IE plus I repeating it CBO, so we have IC minus ICBO is equal to alpha DC into IE. Now we divide this equation by both sides of the equation by by alpha DC. So if I divide both sides of this equation by alpha DC, what do I get? IC by alpha DC minus ICBO by alpha DC is equal to IE. Okay, up to this point, I'm simply dividing the equation by alpha DC. Yes, sir. I can have IC 1 divided by alpha DC minus 1 equal to, now I'm going to break this down into IB plus IC. So IB, तो वो -1 कैसे आएगा? वो तो ICBO है ना? LHS में IC और ब्रैकेट में आपने 1/alpha DC -1 किया है. I jumped a step, so that is the reason why you're not able to understand. Okay, IC by alpha DC. अभी ये IB plus IC है, तो यहाँ पे IC यहाँ पे लेके आता हूँ और ये IE plus ICBO by alpha DC. अब ठीक है? Yes, sir. -1 equal to, this should be IB. है ना? Yes, sir. ये IB plus ICBO divided by alpha. But 1 divided by alpha DC का -1 होता है 1 minus alpha DC divided by alpha DC. ठीक है ना? सिर्फ मैंने इसको Yes, sir. सिंपलीफाई कर दिया. So Yes, sir. IC into 1 minus alpha DC by alpha DC is equal to IB plus ICBO divided by alpha DC. So IC, if I take it to the other side, क्या होगा? Alpha DC divided by 1 minus alpha DC. डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको, ये रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 minus alpha DC into ICBO. So ये alpha DC alpha DC आएगा ना ऊपर में. कैंसिल हो जाएगा ना रेसिप्रोकल किया तो. समझ में आया ये स्टेप? Yes, sir. I'm simply dividing this equation. I mean, I'm simply, what I'm doing is I'm dividing this by reciprocal of this thing, both the sides. या फिर dividing the right hand side by 1 minus alpha DC by alpha DC. ठीक है? Yes, sir. Now we define
beta, very important thing for transistor. As beta, ये factor beta is equal to alpha DC divided by 1 minus alpha DC. इसको मैं ये definition ऐसे करता हूँ. So alpha DC divided by 1 minus alpha DC I'm going to call as beta or beta DC if you want. So what can you say about the value of beta DC? By the way, we have already seen that alpha DC is like between 0.95 and to 0.995. तो अल्फा और बीटा डीसी का वैल्यू क्या होगा? रेंज बोलो तो क्या होगा? बीटा डीसी का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ज्यादा होगा. कैलकुलेट करो ना. अल्फा डीसी 0.95 ले लो, 1 minus 0.95 ले लो. डू इट, कम ऑन. Calculator, you should have calculator with you. So 19. Yes. So 19. हाँ सर 19 आता है. 20, almost 20 ना? Yes sir, 19 आ रहा है अभी. ठीक है ना? So beta DC का value will range from 20 to some higher value, let us say 500 and all that. ये beta DC को बोलते हैं sometimes in other terminology is called as HFE. We'll see that in SDC, H parameters. अभी ये क्या है? So in terms of beta, I have IC is beta DC. I'm just putting it in that equation into IB plus 1 minus 1 divided by 1 minus alpha DC into ICBO. I just use the instead of in terms of beta DC. ठीक है, यहाँ तक आ गए. Yes sir. Beta DC we have defined as alpha DC by 1 minus alpha DC. Hence 1 plus beta DC अगर मैं करता हूँ तो it becomes 1 plus alpha DC divided by 1 minus alpha DC. दोनों साइड में ये 1 ऐड कर दिया. यस सर. तो क्या हो गया? क्या आता है फिर? I get So 1 upon 1 minus alpha DC. 1 minus 1 upon 1 minus alpha. So ये और ये इसका इक्विवेलेंस हमने कर दिया, इक्वल है. So now I can write down completely in terms of beta DC as IC equal to beta DC into IB. ये क्या है इधर? बीटा DC plus 1 और 1 plus beta DC into ICBO. ये बहुत important equation आ गया which tells us the relationship between what? So IB के सर IB के प्लस बाद आएगा. हमारा साइन. IC and IB. सर वो IB के बाद प्लस साइन. ठीक है. Yes sir. So we have got a very important relationship between IC and IB. Now in terms of अभी अगर ये फैक्टर को देखा जाए सिर्फ सेकंड टर्म, तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज ICBO into beta DC plus 1. तो मैं बोलूंगा ICEO. I'll define this term like this. So finally what I get is IC is equal to beta DC into IB
प्लस ICEO, याद रखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हो गया करंट रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट एंड बेस करंट, दैट इज योर इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट। ठीक है, आई थिंक वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, सो स्टॉप हियर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो सर। No, sir. Please make sure that you revise these concepts. यस सर। Yes, sir. All right. Yes, चलो ठीक है। So I'll end the meeting. सर इसके लिए आपने एक बुक बताई थी, वो डेविड ए बेल की। डेविड बेल। यस सर, वही लेनी है सर। हाँ वही, एब्सोल्युटली। यस सर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर के लिए वही लेना है। यस सर। इवन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी वही चलेगा। यूनिट नंबर 5 जो है तुम्हारा, उसके लिए भी वही बुक। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम दैट बुक। यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, any other question?